Assalamu alaikum. Bessel's inequality is our new topic for today's lecture, so we'll start with the Bessel's inequality. If in a Hilbert space H, I is equal to 1 to n are orthonormal, so Ei or Ej is equal to delta Ij for all u belongs to H can be write in the form of V is equal to J I is equal to 1 to n u Ei to Ei. Then the norm square is equal to I is equal to 1 to n summation u into Ei mod square less y equal to V norm square. Then we can call Ei or Ej is equal to delta J in which Ei is an orthonormal space if H is a Hilbert space. The last statement follows immediately by computing u of Eij or Veij. And similarly, V norm square can be computed directly. That the inequality which is Bessel's inequality follows Cauchy inequality since the last statement. Bessel inequality basically क्या है कि हमारे पास requirement है कि H is equal to H must be a Hilbert space और इसमें जो हम कोई भी space लेंगे Ei it will be a orthonormal if it holds the equation 1. According to the norm definition, you can write the norm square into inner product and collier property. After that, you can write Vu or Vu mod less than equal to. अगर हम separate condition लगाएं let Ek, then it shows that V norm is less than equal to U norm. Now let Ek be an orthonormal sequence in an inner product space X. Then for every x it must be whole if Ek is an orthonormal sequence, then in an inner product space then it must be whole this property like summation is equal to k by is equal to 1 to infinity between mod square is less or equal to x mod square. Orthonormal basis. Orthonormal basis, since in the inequality in the Bessel inequality the right side is independent of n, it follows of the Ei is equal to 1 to n, but it is the right side is independent, so is countable orthonormal set. Then you can write in this form according to the situation. From this it follows that the sequence Vn I is equal to 1 to n u I Ei into Aj is a Cauchy. Since m is greater than n, तो हमारे पास ये condition hold करेगी. Lemma: if H is a Hilbert space, so now we assume completeness and Ei is equal to 1 to infinity is an orthonormal sequence. Then for each u belongs to H, तो हमारे पास क्या ये कन्वर्ज भी करनी चाहिए और ये ऑर्थोनॉर्मल भी होनी चाहिए. तो हम स्टार्ट करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है सिंगल सीक्वेंस इज अ Cauchy सीक्वेंस, सो ये स्पेस भी कंप्लीट है. अगर स्पेस भी कंप्लीट है तो ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगाएंगे. ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगाने के बाद हमारे पास ये होगा कि एस n इज ग्रेटर और इक्वल टू j एंड u माइनस v Ej इज इक्वल टू लिमिट n अपोजिट टू इन्फिनिटी u माइनस v और Ej इज इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर हम Cauchy इनइक्वालिटी लगाते हैं. Now we can say that an orthonormal sequence is complete. अगर हम दूसरी साइड लें कैसे अगर ऑर्थोनॉर्मल कंप्लीट है एंड ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ एच है तो ऑर्थोगोनल है, और अगर वो ऑर्थोनॉर्मल है तो वो ऑर्थोगोनल तो लाजमी होगा. अगर वो ऑर्थोनॉर्मल है तो ऑर्थोगोनल तो लाजमी होगा. तो हमारे पास इसकी सेकंड साइड भी प्रूव होती है. नेक्स्ट थ्योरम क्या है? एवरी सेपरेबल हिल्बर्ट स्पेस हैज़ एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. Take a countable dense set which can be arranged as a sequence Vj and existence of each is the definition of separability and normalized if V1 is not equal to 0 और ये हमारे पास कंडीशन हो तो हमने इसको कि सेपरेबल की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि आपकी हिल्बर्ट स्पेस सेपरेबल हिल्बर्ट स्पेस है ऑर्थोनॉर्मल. सेपरेबल हिल्बर्ट स्पेस के लिए क्या है? टेक अकाउंट डेंस सेट होना चाहिए जो
सीक्वेंस का उसी कंडीशन ये है। इसका इंडक्शन अगर हम करेंगे तो हमारे पास i इज इक्वल टू 1 to m से स्टार्ट लें, वेयर m इज लेस इक्वल टू n विच आर ऑर्थोनॉर्मल एंड साइज दैट। अगर वो ऑर्थोनॉर्मल है तो उसको लीनियर स्पैन में लिखा जा सकता है। अगर लीनियर स्पैन में लिखा जा सकता है तो हमारे पास इक्वेशन बनती है w इज इक्वल टू b टू n प्लस 1 माइनस j, मीन्स के हमने ई आई ये वर्क और n प्लस 1 के लिए भी वर्क कर सकता है। सो ई एम प्लस 1 इज इक्वल टू w और w नॉन मेक सेंस। According to the em plus 1 gives the inequality of the span for n plus 1, thus the continuity indefinitely. Thus these are only two possibility, either the gas finish at EIJs or infinite, मीन्स कि ये काउंटेबल होगा या नहीं होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए केस देखेंगे। फर्स्ट केस अगर हम लें, फर्स्ट अगर हम ये क्लेम करें कि एज बिलोंग्स टू या ऑर्थोगोनल पार्ट से करता है और u इज इक्वल टू जे बिलोंग्स करता है जे अप्लाइज टू u और u इज इक्वल टू 0। दस यूज अगर हम u n को लें तो हमारे पास w j किस फॉर्म का बनेगा और इज अ फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ केस है। सो बाय द बेसल इनइक्वालिटी वी कैन राइट दिस फॉर्म इनटू अकॉर्डिंग टू द बेसल इनइक्वालिटी, जो कि ऑर्थोगोनल को भी के लिए है। अगर ये ऑर्थोगोनल को प्रूव कर ये कंडीशन हो रही है तो ऑर्थोगोनल होगा। अगर वो ऑर्थोगोनल है आपके पास तो आप इस कंडीशन को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ग्रीन फंक्शन। ग्रीन फंक्शन क्या है हमारे पास, क्या कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ये किस लिए है। ग्रीन फंक्शन हमारे पास है अ ग्रीन फंक्शन gx of s of a linear differential operator acting of distribution subset of Euclidean space पर अप्लाई होता है। A point s is an solution is a solution of delta where delta is the direct delta function. This property of a green function can be applied to solve differential equation of the form linear differential operator है और यूक्लिडियन स्पेस पर अप्लाई होता है और उसमें जो पॉइंट है ऑफ एनी सोल्यूशन इज एनी सोल्यूशन ऑफ डेल्टा ऑफ एक्स वाई, डेल्टा इज द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है। Lg of x is equal to plus Lg x of s delta of s minus s. If the kernel of L is non-trivial, then the green function is unique. अगर हमारे पास सबसे जरूरी क्या है, लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर है जिससे ग्रीन फंक्शन बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर है और यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो पॉइंट्स में आता है। जो पॉइंट है वो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड है। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या है, डेल्टा आई जे इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू जे टू 1 एंड आई इज इक्वल टू जे है तो आंसर 1 होगा। आई इज इक्वल टू जे है तो आंसर। और अगर यहाँ पर कर्नल एल इज़ नॉन ट्रिवियल हो, अगर कर्नल एल नॉन ट्रिवियल हो तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन फंक्शन इज यूनिक। However, in practice, some combination of symmetry, boundary condition, and others extremely imposed criteria will give a unique green function. कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फंक्शन के हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं कि हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम उसको कंपेयर करते हैं, एसोसिएट करते हैं सिस्टम लाइबल प्रॉब्लम। सिस्टम लाइबल प्रॉब्लम क्या है, वाई प्लस लैम्डा पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स, वेयर एल क्या है आपके पास पी ओवर डी एक्स पी ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स विद द पॉइंट कंडीशन, या आप इसको कह सकते हैं बाउंड्री एलिमेंट कंडीशन, वेयर कंडीशन क्या है बिटवीन ए टू बी। स्टेप 1 क्या है, पुट लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू of the problem, is not an eigenvalue with homogeneous part of stem level problem. Ly plus lambda p of x y is equal to 0 corresponding to the condition r naught of y plus r1 of y is equal to 0. Step 2 आपके पास क्या है, g of x satisfy the condition. in condition क्या है, between the condition means between the boundary a to b के दरमियान हमें एक और पॉइंट x ऐड करना है। Put lambda is equal to 0 first one, and the second step is gx of x dash must satisfy the differential equation, and g is equal to 0. Third, satisfy the boundary condition. Fourth, satisfy it must be a continuous
green function must be continuous, और था फिफ्थ for discontinuity. ये आपकी कंडीशन आ गई है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसके रिमार्क्स लें, ये एग्जांपल है, ये आपके पास, इसको हम सॉल्व करेंगे कि हमारे पास किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ये इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बाउंड्री कंडीशन के साथ आप अप्लाई करेंगे, इसके लेवल से इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फिर स्टेप 1 आपके पास आएगा कि आपने प्रूव करना लैम्डा इक्वल टू 0, और फिर स्टेप 2 आप करेंगे। फिर स्टेप 3 में आपने क्या करना है, इसकी बाउंड्री कंडीशन लेनी है। फोर्थ में आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। फिफ्थ में आपने इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। फिर आपके पास एक कंस्ट्रक्ट होकर ग्रीन फंक्शन एसोसिएटेड विद स्ट्रिंग का प्रॉब्लम और कंडीशन पर प्रॉब्लम 1 एंड कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा।